Okay, babies. So we are going to start with dodging numbers. Dodging numbers में मैम आपको numbers randomly बोलेंगे और आपने number को recognize करना है और आपने accordingly आपने लिखना है, right? So first of all, number one. Number one, all of you write 13. 13. Right? 13. Number one is 13. Number one is 13. In front of number one, right here, 13. Just show me your thumb if you have written. Thirteen. 13. Next, in front of number two, write 23. 23. Write 23. In front of number two, write 23. 23. 23. Right. So next is number 3. In front of number 3, write 32. 32. Number 3 is 32. 32. Alright. Now next is number 4. In front of number 4, write 59. 59. 59. Right? Alright. So you have done 59. Now next is number 5. Number 5. In front of number 5, write 67. 67. Number 5 is in front of number 5, 67. 67. Good. Alright. Next is number 6. Number 6, write 74. 74. 74. 74. Okay. Now next is number 7. Yes, ma'am. 74. 74. Next, number 7. In front of number 7, write
26, 26, 26, 26. Number 7 is 26. Number 7 is 26. Good. Now next is number 8. In front of number 8, write 40. 40. 40. Write the number 40. 40. Number 8 is 40. Good. Now, next is number 9. In front of number 9, write 80. 80. 80. 80. Write the number 80. 80. 80. Good. Well done. Now, next is number 10. In front of number 10, you will write 16. 16. Write the number 16. 16. Yes? Good. Well done. All have done? So I am going to revise the numbers once more. I am going to repeat the numbers. Please check. Number 1 I said 13. Number 2 I said 23. Number 3 I said 32. Number 4 I said 59. Number 5 I said 67. Number 6 I said 74. Number 7 I said 26. Please check. Number 8 I said 40. And number 9 is 80. And number 10 is 16. So you've done your work? Right? So let's... Hanji ma'am. Sare? Okay. Number 1 I said 13. Number 2, 23. Number 3, 32. Number 4, 59. Number 5, 67. Number 6, 74. Number 7, 26. Number 8, 40. Number 9, 80. And number 10 is 16. It's okay, ma'am? Alright. So now we'll move on to the next concept, which is broken counting. So the next concept is broken counting, and you have to write broken counting
from the number 45. You will start from 45 and you will end on 54. 45 you will start. So let's begin. Okay, the first number write 45. 45. Broken counting. It's broken counting. Right? 45. After 45 comes 46. Right, babies? 46. 46. Okay. The next number is 47. 47. Right? 47. After 47 comes 48. 48. So babies, write 48. 48. If you've done, show me a thumb. 48, have you written? Show me a thumb, someone. Thumbs are not coming up. Alright, thank you. So I can see one thumb coming up. Only one child has done. बाकियों के thumb नहीं दिख रहे मुझे. बाकी नहीं दिखा रहे अपना thumb. So babies, the next number is 49. 49. Write all of you 49. Babies, आपने 4 की फॉर्मेशन का ध्यान रखना है. It's slanting line, then sleeping line, and then again standing line. 49. 49. After 49 comes 50. 50. 50. Take care of the formation part. Take care of the formation part. Write beautiful formation. आप slow लिखते हो, no issues, but formation should be very nice. जैसे मैम लिखते हैं, try to write like मैम. Okay. After 50 comes 51. 51. 51. 52.
51. Write everyone 51. Good. Well done. Next, after 51, write 52. 52. All of you write 52. 52. 52. Next, write 53. 53. 53. Okay, next number is 54. Right? 54. 54. Well done. So baby, yes, हमारी ब्रोकन काउंटिंग कहां से कहां तक थी? 45 to 54. So let's check. हम चेक करते हैं हमारी करेक्ट है. Let's start. 45 से स्टार्ट होनी थी. So let's read. आपकी आवाज बाहर नहीं आनी चाहिए. मम्मा को आपकी आवाज सुननी चाहिए. Right? 45. 46. आपने बोलना है. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53 and 54. तो हमारी करेक्ट है ना काउंटिंग? 54 आ गया. राइट? थैंक यू. नाउ नेक्स्ट कंसेप्ट इज टेबल ऑफ जीरो. Okay, so now we will write table of zero. So pick up your pencils. Zero, multiply sign, zero equals to zero, zero. Table of zero. So how to read it? Zero, zero, the zero. Right, baby? Zero, zero, the zero. Zero, zero, the zero. Next, zero again, multiply sign. Now after zero will come one. You will write one here, equal to sign, and again zero,
0. So we will read it like this. 0 ones are 0. 0 ones are 0. मैम के साथ साथ आपने लिखते जाना है. Next again a 0. Multiply sign. After 1 comes 2. And again equal to sign. 0 2s are 0. 0 2s are 0. Keep writing along with ma'am. मैम के साथ साथ आप भी लिखते रहिए. Next again 0. Multiply sign. Now after 2 will come 3. And equal to sign. 0 3s are 0. Again 0. So we are going to write 2 zeros. Right? Next. Again a 0. Multiply sign. After 3 will come 4. Equal to sign. 0 4 the 0. Right? Next. Again a 0. Multiply sign. After 4 comes 5. And equal to sign. 0 5 the 0. 0 5 the 0. 0 5 the 0. Okay. Now next. Again a 0. Multiply sign. And after 5 comes 6. Then equal to sign. And how to write? 0 6 are 0. So again we put 2 zeros. Again we put a 0. Put a multiply sign. After 6 will come 7. Equal to sign. And read it. 0 7s are 0. 0 7s are 0. Next again we put a 0. Put a multiplication sign. After 7 comes 8. Then equal to sign. 0 8s are 0. 0 8s are 0. 0 8s are 0. Again 0. Put a multiply sign. After 8 comes 9. Then equal to sign. 0 9s are 0. Again 0. Multiply sign. And after 9 हमने 10 सेम 1 बॉक्स में लिखना है. 1 बॉक्स में हमारा 10 आना चाहिए, 2 बॉक्सेस में नहीं. Okay? Then put a put the equal to sign and read it. 0 10s are 0. So our table is complete. 0 10s are 0. If all have completed, then you show me a thumb. जैसे सबका complete होता है, show me a thumb. Oh wow, well done. तब तो मैम के साथ साथ कंप्लीट कर ले रहे हैं. Good, good, excellent, very good.
Now, beta, next concept is, next page, we will draw and color a circle. Draw and color a circle. अब सर्कल ड्रॉ करने के लिए मैम ने आपको बोला है कि आपने बैंगल यूज करनी है। आपने बैंगल को होल्ड करना है अपने नोटबुक के ऊपर और पेंसिल के साथ आपने इनर सर्कल में ड्रॉ करनी है सर्कल। बट मैम के पास बिग सर्कल तो है नहीं, बोर्ड पे मैम बनाएंगे तो बहुत छोटी सी सर्कल बनेगी, राइट? सो मैम इज गोइंग टू डू इट फ्री हैंड। सी, मैम तो ऐसे ही ड्रॉ करते हैं, हाफ सेमी सर्कल and from the other side another semicircle and complete the circle. Yes, now you will fill colors in the circle. First of all, complete the outline. आपने outline में colors करने हैं, right? Then you will fill the inner part. आपको कहीं पे अगर लग रहा है कि वहां पे कलर छूट गया है तो आपने वहां पे दोबारा से कलर करके नीटनेस लेके आनी है, राइट? So the circle is also complete. You also complete the circle with coloring. सबने बैंगल के साथ ही सर्कल बनानी है. All of you have to draw it with a bangle. Oh wow, so nice. So you have completed your circle. बेटा आपकी सर्कल में मुझे आपकी नोटबुक का व्हाइट पार्ट नजर आ रहा है थोड़ी जगह पे, उसको भी आप कवर कर दीजिए। जहाँ पे व्हाइट व्हाइट नजर आ रहा है उसको कवर कर दीजिए। ऑल राइट, LKG pink, LKG pink babies, have you done? Okay. Very nice, beautiful coloring, very good. रानी आप भी दिखाइए। Show me your circle. सबकी सर्कल बहुत सुंदर हो रही है। Yes, beautiful circle. Okay, babies. All have done the written work. So now we are going to do some oral work. मैथ में हम टेबल्स की रिवीजन करेंगे। सबने बोलना है बट माइक अनम्यूट नहीं करने। आपके मम्मा सुनेंगे और मैम को पता चल जाएगा, राइट? आपने मैम के बाद बोलना है। मैम बोलेंगे पहले, फिर नेक्स्ट आप बोलोगे, राइट? 0 0 द 0, 0 1 the 0, 0 2 the 0, 0 3
fours are zero. 0 fives are zero. 0 six are zero. 0 sevens are zero. 0 eights are zero. 0 nines are zero. 0 tens are zero. Very good. Once more. रूहानी आपका फिनिश नहीं हुआ? रूहानी का फिनिश नहीं हुआ? रूहानी अनम्यूट, अनम्यूट करके बताइए। कलरिंग कंप्लीट, कंप्लीट नहीं हुई अभी? अच्छा कर लो फिर, कर लो आप फिर मुझे दिखा देना, फिर उसके बाद हम दोबारा से करेंगे, ठीक है टेबल? नहीं तो आप कलरिंग थोड़ा बाद में कर लेना, पहले ओरल कर लो। रूहानी, रूहानी बेबी पहले ओरल कर लेते, कलरिंग बाद में कंप्लीट कर लेते। ओके, वंस मोर। 0 0 0 0 ones are zero. 0 twos are zero. 0 threes are zero. 0 fours are zero. 0 fives are zero. 0 six are zero. 0 sevens are zero. 0 eights are zero. 0 nines are zero. And 0 tens are zero. 0 tens are zero. Good, great. Now, let's revise table of 1. Okay? 1 zeros are zero. 1 zeros are zero. 1 ones are 1. Click your hands. 1 ones are 1. 1 twos are 2. 1 threes are 3. 1 fours are 4. 1 fours are 4. Everybody, clap like this. 1 fours are 4. 1 fives are 5. 5 clap. 1 fives are 5. Now other side. 1 six are 6. In front. 1 sevens are 7. 1 eights are 8. 1 eights are 8. 1 nines are 9. 1 nines are 9. 1 tens are 10. 1 tens are 10. 1 tens are 10.
All right. So keep revising your tables. आप टेबल्स बोल के मजा आया ना? तो बेटा ऐसे ही ऐसे ही डिफरेंट डिफरेंट एक्शन करके टेबल्स बोलोगे, विद एक्शन ऐसे आप इंजॉय करोगे टेबल, तो आपको बहुत जल्दी लर्न हो जाएंगे। अगर आप ऐसे ही बोलोगे 0 0 0 0 1 0, आपको इंजॉयबल भी नहीं लगेगा और आपको याद भी नहीं होगा। ऐसे आप एक्साइटमेंट में इंजॉय करके अगर टेबल को लर्न करोगे, आपको वेरी फास्ट लर्न हो जाएगा, राइट? तो थैंक यू सो मच फॉर योर कॉपरेशन। आज आपने बिल्कुल शोर नहीं किया। यू रियली हेल्प मी आउट। सबने मेरी हेल्प की है। वेरी गुड बेबी, थैंक यू सो मच। अभी बाय बाय नहीं बोलती हूँ, मैं दोबारा आपकी अटेंडेंस चेक करती हूँ आपके साथ।